Hi guys, this is the second video for the first week on the 4-week certificate course on PoSH, and in this video we'll be discussing on the forms of workplace sexual harassment. Now, जब हम लोग sexual harassment की बात करते हैं and when we have even looked at the definition, we have seen कि sexual harassment जो है वो फिजिकल भी हो सकता है, एनी अनवेलकम फिजिकल और वर्बल और जेस्चरल एडवांसमेंट्स जो कि एक इंसान को अनकंफर्टेबल बनाते हैं, जो कि एक हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो ऐसे सारे जो एक्ट्स होते हैं इनको हम लोग काउंट करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट। बट फॉर्म्स क्या होते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट टू creating a hostile work environment or creating a sexual harassment scenario. So we'll divide it into physical, verbal and non-verbal. तो फिज़िकल की जब हम लोग बात करते हैं फिज़िकल सेक्सुअल हरासमेंट की, इट इंक्लूड्स एनी फॉर्म ऑफ अनवांटेड टचिंग, पैटिंग, ग्रैबिंग, रबिंग, पिंचिंग, हगिंग और किसिंग। दैट इज़ कोई भी इंसान अगर आपसे ज़बरदस्ती का चिपकना चाह रहा है, व्हेन ही इज़ नॉट योर फ्रेंड और ही इज़ नॉट समवन हु यू आर क्लोज टू एंड ही इज़ purposely or she's purposely trying to come close to you, touch you in one way or the other, that makes you feel uncomfortable, even trying to hug you or grabbing you or patting you, even touching you even in the slightest possible way so as to make you uncomfortable, that is physical sexual harassment. जब हम लोग वर्बल की बात करते हैं, it comes to verbally expressing your desires, now requesting for sexual favors, now speaking that you have a desire to engage in a sexual contact with the other person, or telling sexual jokes using sexually explicit language. All these would constitute to verbal sexual harassment. That is, आप अगर एक वर्क एनवायरनमेंट में हो या फिर एक कॉलेज में हो एंड योर saying inappropriate things or saying sexual things to the other person, or saying things with a hidden meaning in it, जो बोलते हैं काफ़ी लोग की डबल मीनिंग की बातें कर रहे हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेक्सुअल फेवर्स डिमांड कर रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो, दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट वर्बल सेक्सुअल हरासमेंट। नाउ नॉन वर्बल, अब नॉन वर्बल से यहाँ पे मतलब है जेस्चर का। ना किसी को लगातार घूरना, किसी का पीछा करना, या फिर शोइंग पोर्नोग्राफी, या फिर शोइंग इवन एक्सपोजिंग योरसेल्फ, तो ऑल दीज आर इनडिसेंट बिहेवियर, दीज आर जेस्चरल। ना आप फिजिकली कुछ कर रहे हो, ना आप वर्बली उसको कुछ बोल रहे हो, बट आपका जो एक कॉन्टेक्ट है, आपका जो एक एक्ट है, वो एक इंसान को परेशान कर दे रहा है एंड इट इज़ hampering with their mental health. Now, those are known as non-verbal or gestural sexual harassment. So basically जब हम लोग sexual harassment की बात करते हैं, ये 3 broad categories है, physical, verbal and non-verbal. इनमें से कोई भी act अगर आपके या आपके किसी भी peer के साथ हो रहा है, the first and foremost thing you should do is approach the appropriate authorities, talk to them and tell them about the situation, because नेवर एवर यू शुड हेल्प द परपेट्रेटर्स, क्योंकि अगर आप चुप रहोगे तो आपके साथ ये और होगा। सो ऑलवेज स्पीक अप एंड always be aware of your rights and also aware of your situations of what is happening. Now, coming again to the topic, it is workplace sexual harassment. अब वर्कप्लेस सेक्सुअल हरासमेंट जो है कोर्ट ने 2 तरह के रिकॉग्नाइज किए हैं, दैट इज क्विड प्रोक्यो एंड हॉस्टल वर्क एनवायरनमेंट। जो क्विड प्रोक्यो है, इसका मतलब है दिस फॉर दैट और समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग। ये टर्म आपने कॉन्टैक्ट में सुना होगा जब अपन कंसिडरेशन की बात करते थे, दैट इज वंस यू रिसीव सम गुड्स, आपको उसके कंसिडरेशन में कुछ देना होगा, दैट इज क्विड प्रोक्यो। सो for example, receiving a job or educational opportunity as a consideration for some kind of sexual favor, that is, मान लो आपका बॉस आपको बोल रहा है कि you give me this sexual favor and I'll give you the promotion that you wanted. अब इससे क्या होता है, not only is that person being pressured into having a sexual relationship, but
बाकी जो सन ऑफिस में काम करते हैं उनको भी ये लग सकता है कि वो जो दूसरी लड़की है, सी फॉर एग्जाम्पल शी इज़ रिया, she got a promotion undeserving, and why she got it? क्योंकि she had a sexual relationship, so it creates a bad work environment. ऐसे ही hostile work environment पे जब हम आते हैं, how it can be created by behaviors such as addressing women in crude or objectifying terms, posting pornographic images in the office, and making demeaning or derogatory statements about women, such as telling anti-female jokes. Now the definition, surely it is female centric, लेकिन males के साथ भी ये हो सकता है. So don't keep your perspective very narrow. Take it in a broader term. So, addressing a person in any objectifying terms, posting pornographic images, making derogatory comments about a person, that is किसी को demean करना, किसी के बारे में rumors फैलाना, and किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में स्पेसिफिकली कुछ बोलना, जिससे लोगों को उस पे से भी विश्वास उठ जाए एंड लोग फिर उससे दूर रहने लगे. ठीक है, ऐसा कुछ भी हो जिससे एक हॉस्टल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए या फिर कुछ एक ऑफेंसिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए. Now all those behaviors would constitute to creating a hostile work environment. In the next video we'll be discussing both these topics in details. So before that, let's understand the difference between two. Now, there's quid pro quo and hostile work environment. Quid pro quo, as it states, it involves a situation where employment benefits are offered or withheld based on the victim's submission or to rejection of unwelcome sexual advances. Now, quid pro quo में specifically क्या होता है? Say for example, or you have been approached that you do this particular sexual favor for me and I'll give you a good grade in your exam, or I'll give you A in your dissertation. ठीक है, what you do, you reject, you say no, I have my pride, I won't do this, जिसके कारण क्या होता है, आप फेल हो जाते हो. That is what, that is withholding something that you're deserving of. That is what happens in a quid pro quo situation. Whereas in hostile work environment, it is an intimidating and offensive work environment. And why is it created? Due to continuous and severe sexual harassment, making it difficult for the victim to perform his or her job. Now, when we talk of hostile work environment, it is not necessary कि यहाँ पे कोई explicitly आपको बोले कि if you don't do this sexual favor for me, I'll withhold this particular benefit from you. ऐसा ज़रूरी नहीं है. Now, quid pro quo typically involves power imbalance. That is, a person is an authority. मान लो आपका मैनेजर है, आपका टीचर है, आपका डीन है, ठीक है, and he uses that position to make sexual advances. Now that is what quid pro quo is. ठीक है, तो इसमें एक power imbalance. It is usually a position of junior and senior. Now, in hostile work environment, it can be between your peers, your classmates, your colleagues, or even supervisors, or subordinates. That is even people who are junior to you. तो इसमें कोई डायरेक्ट पावर डायनामिक का केस नहीं होता, इसमें कोई डायरेक्ट सीनियर जूनियर वाला केस नहीं होता. देन क्विड प्रो क्यो में जब हम आते हैं, इट इन्वॉल्व्स explicit request for sexual favors or other sexual conduct in exchange of job benefit promotion. And when we talk of hostile work environment, it is something that includes offensive jokes or comments या फिर any other such advancements जिसके कारण एक offensive environment create हो जाए, even if there is no explicit quid pro quo exchange. That is, even if there is no explicit senior junior का situation there or something in benefit of the other. ना क्विड प्रो, क्योंकि जब हम बात करते हैं, इट इज़ अ गिव एंड टेक काइंड ऑफ सिचुएशन. अगर तुम मुझे ये दोगे तो तुम्हें ये चीज़ मिलेगी, या फिर तुम नहीं दोगे तो तुमसे मैं ये चीज़ ले लूँगा. दैट इज़ नॉट नेसेसरी इन हॉस्टल वर्क एनवायरनमेंट. Then, a supervisor offering a promotion in exchange for a subordinate's agreement to engage in sexual relationship. A very typical example of quid pro quo. मान लो आपका मैनेजर बोलता है कि अगर आप मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहोगे
तो मैं आपको प्रमोशन दे दूंगा एंड आपकी इंक्रीमेंट हो जाएगी. दिस इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्विड प्रो क्यो. ना हॉस्टल वर्क एनवायरनमेंट, मान लो कि आपके पेयर्स है जो आपके साथ काम कर रहे हैं एंड वो बार बार आपसे दूर होते जा रहे हैं, आपके बारे में ऑफेंसिव जोक्स बोल रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं, जिसके कारण आप काम नहीं कर पा रहे हो सही से, ठीक है. एंड ऑल दीज जोक्स आर ऑफ सेक्सुअल नेचर एंड दे आर ऑफेंसिव टू यू एंड वेरी डेरोगेटरी. तो ये क्या होता है, इससे हॉस्टल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होता है. दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस. नाउ टू सम इट अप, क्विड प्रो क्यो में एक पावर डायनामिक होता है. दैट इज़ मोस्टली एक सीनियर इन्वॉल्व होता है और एक जूनियर इन्वॉल्व होता है. सीनियर क्या करता है, वो अपनी उस पोस्ट का यूज़ करता है ताकि वो जूनियर को इन्फ्लुएंस कर सके टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप्स विथ हिम और हर. लेकिन हॉस्टल वर्क एनवायरनमेंट ये सीनियर जूनियर में भी हो सकता है, जूनियर सीनियर में भी हो सकता है, और आपस के दोस्तों में भी हो सकता है. दैट इज़ पीयर ग्रुप में भी हो सकता है या फिर कॉलीग्स में भी हो सकता है. दैट इज़ द मोस्ट बेसिक difference between quid pro quo and hostile work environment. Now that is it for this video, and in the next video we'll be discussing this topic, that is the quid pro quo and hostile work environment, in much more detail. Thank you.